ओके, सो गुड इवनिंग। आई होप सो आप लोग सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। सो नाउ लेट्स जस्ट jump into the main point that we need to realize that exams are happening every 6 months and the August attempt has been cancelled. And there is only one batch this time in our institute. So you all need to basically understand that in order to excel in your November exams, you need to do live classes. And currently, we have started the batches around 1 month ago only. Only CM1 we are going to do roughly uh, 15 sessions, revision sessions more. But apart from that, if you see, 20% of the classes have been done, and rest 80% you all can do live. So June 1st is the last day to take the admission, and if you have attempted approximately 70% in paper A and 50% in paper B, then you all should go for a new paper. Okay, and just don't think much about the exam which you have already done. In the due course, in the next couple of weeks, we'll be discussing the paper as well. This is the first time that I, Shivangi ma'am, and Ankit sir will be discussing the papers. Okay, just in a brief manner that what was there, what was not there, like easy, difficult, medium, something like that. But the main point is that मैं भी order discuss करने वाला हूँ आपके साथ में कि किस तरीके से आपको एग्जाम्स देने हैं। तो अगर आप देखो, अगर अभी आपने CM1 दिया, ऑर्डर ये होना चाहिए CM1 के बाद CS1, देन CS2, देन CM2। उसके साथ में आप छोटा पेपर भी दे सकते हो विच इज CB1 एंड CB2। और अगर आपका CB सीरीज क्लियर हो गया देन यू कैन गो फॉर CP2 CP3। सो दिस इज द बेसिक ऑर्डर विच वी विल फॉलो। बट अभी ऐसा हो गया है कि अगर आपने CS1 दिया है और आपका CM1 और CS2 में चॉइस है, तो आप CS2 भी कर सकते हो, CM1 भी कर सकते हो। अगर आपने भी CM1 क्लियर है, फिर CS1 क्लियर है, आपने दूसरा वाला पेपर दिया मे बी CM1 CS1, जैसे आपका CS1 क्लियर, आपने CM1 दिया एंड वैसे वर्जा। तो अभी आप चाहो तो आप बेसिकली आप CS2 भी कर सकते हो, CM2 भी कर सकते हो। सो ये टोटली आपके ऊपर में है कि आपको कैसे ऑर्डर्स करने हैं, बिकॉज ऑल द ऑर्डर्स आर टेस्टेड। बट एक बड़ा पेपर आप लोग सबको ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी जून 10 तक क्लासेस विल बी एट अ स्लोअर पेस। एंड उसके बाद में लाइक फ्रॉम 10th of June we are going to do classes in a very nice manner, and almost every week there is going to be roughly 5 to 6 classes, and we'll complete the syllabus by July end so that you get ample time for revision. August will be full of revision, and then the IAI mentors are going to take only IAI specific classes, which is September, October, okay, and November mid. काफी सारी चीजें हैं, जैसा कि आपने देखा हमारा LMS है, वन टू वन मेंटरिंग है, मॉक्स है। आप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हो अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो, राइट। एंड आई एम ओपन नाउ। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे और कॉल पे डाल सकते हो। टुमारो ऑल्सो आई विल बी फ्री। मेरा बीच में बस खाली 12 बजे से क्लास है, सॉरी 2 बजे से क्लास है, 2 से लेके 6 बजे तक। सो उस समय मैं फ्री नहीं रहूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एंड टुडे ऑल्सो आई एम फ्री टिल 12। So you all can just discuss your plans. But yes, you all should understand that एक फीडबैक फॉर्म है जो हमने भेजा है, वो आपको भरना बहुत जरूरी है। एंड recently we have started with SA level papers as well. So someone who has given SP or maybe CP, they can start with SA, SP, etc. So the whole point of keeping this session, it's आई ओपनर सेशन कि आपका एग्जाम हो चुका है, अभी आपको फ्लो अपना नहीं छोड़ना है। बिकॉज आपको ये समझना होगा कि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। सो आपको नवंबर अटेम्प्ट अपना प्रॉपरली प्लान करें, यू विल गेट अ परफेक्ट 6 मंथ्स। तो आपको उतना प्रेशराइजिंग भी नहीं लगेगा और आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। सो रिकॉर्डेड इज समथिंग दैट वी हैव डिसकंटिन्यूड, सो प्लीज डोंट कॉल एंड रिक्वेस्ट कि रिकॉर्डेड मिल जाएगा क्या, एंड बिकॉज रिकॉर्डेड विल नॉट बी एबल टू गिव यू, बिकॉज सिलेबस इज चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली। So all the classes are basically conducted in a new pattern, as per the new pattern. You will not realize, but there are very major changes, like paper turning from practical to theoretical, and explanation based more compared to only the practical problems. So that is why, and IIA के लिए specifically MCQs वगैरह। So वो feedback form आप सबसे पहले भरो। Based on that, आज या फिर कल में you all just message me whatever your query is, and accordingly we can basically plan the sessions.
एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज में डाल दो, डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक. एंड लाइक इट्स 100% लाइव बैच. So you need to realize the importance of live classes and you need to join at the time. अगर मान लो यही आप 15-20 दिन डिले करके ज्वाइन करते हो या फिर बोलते हो मैं एग्जाम के बाद ज्वाइन करूंगा फिर करूंगी, सो दैट्स नो पॉइंट राइट, क्योंकि आपका फिर वही डिले चालू होगा ना, वो लूप में फंसते चले जाओगे. बहुत लोग का अटेम्प्ट नहीं हुआ है, बहुत लोग ने मेरे को मैसेज डाला है कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया. स्टिल मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक नया पेपर चालू करो, रिजल्ट तक उसको 50-60% कंप्लीट करो, एंड देन यू क्लब दैट पेपर एंड गिव इट विथ द पेपर राइट नाउ विद अस, द न्यू पेपर. ठीक है ना, ऐसा आपका साइकिल मूव ऑन होते रहेगा. एंड आईए स्पेसिफिकली रिजल्ट्स इतने वोलेटाइल है कि आपको हमेशा दो पेपर तो देना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है राइट, एग्जाम ऑनलाइन भी हो रहा है. सो आपको ये समझना होगा कि कोई एग्जाम आपका खराब चला गया, कोई भी टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो गया, तो दो देने से सही रहता है. एंड मान लो CM1 आपने एक पेपर प्रिपेयर करके दिया, आपका उसमें 4% रिजल्ट हुआ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी इन दैट 4%. सो जस्ट थिंक एंड प्लान, एंड आपको उसमें जो भी हेल्प चाहिए विल बी देयर. एंड यू ऑल कैन जस्ट फ्रीली मैसेज मी वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, एंड आपका जो भी कंसर्न है रिगार्डिंग एडमिशंस, आई विल बी देयर. एंड यस, June 1st इज द लास्ट डेट, बिकॉज उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते भी हो, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ गारंटी कि भाई आपका लाइव क्लास में आप आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे. बिकॉज अगर आप June 1st तक ले लेते हो तो फिर अगर आप June 1st तक ले लेते हो तो फिर आपको ये रहेगा कि आपके पास में रफली 10 डेज रहेंगे कोप अप करने के लिए, एंड जब आप लाइव क्लास में हमारे साथ कर सकते हो. This is the best way you can stay ahead with us. So yes, that was just a short session, and yes, now you all are free. Since I'm on the go, I'll not be able to take much of queries. But yes, two to three few important points which I wanted to point out is that it's a 100% live batch, and CM1 में खास करके हमने एक नया बैच चालू करना है. बट आपको बैच 1 के सारे रिकॉर्डिंग्स देखने होंगे. बाकी सब बॉम्बे में हमारा ऑफलाइन क्लास चालू हो गया है, एंड वी विल बी ट्रैवलिंग. आई शिवांगी मैम, Anankit sir will be traveling more and more. Okay. एंड 3 लोकेशंस पे हमारा ऑफलाइन है. जैसे आप क्या क्या चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो, सबसे पहला 1-to-1 मेंटरिंग, उसके बाद में ऑफलाइन मेंटर्स जो हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है ना. सो ये सब के लिए आपको टाइम चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे. एंड दिस टाइम विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्टीट्यूट मटेरियल, एंड ऑल द क्लासेस विच आर गोइंग टू टेक इज टोटली एज पर द न्यू सिलेबस पैटर्न एज पर November 25. एंड weekends but definitely there will be classes, and it's not that the class timing is fixed at maybe 11 a.m. or maybe 1 p.m. We are keeping it revolving so that all the students will be able to attend. Okay. So छुट्टी रहेगा, यू में एग्जाम है, बट जून जुलाई इज द टाइम आप अच्छे से पढ़ सकते हो. सो जून जुलाई अगस्त स्टडी नाइसली, सो दैट आपको कॉलेज एग्जाम कुछ भी रहेगा आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना. एंड यू हैव माय नंबर, सो यू कैन जस्ट मैसेज इन पर्सन whatever is the query. And if you need doubt, but I will always suggest go with two papers, because then only you will be able to uh, well well diversify whatever your plan is. Okay. So yes, that was it, and thank you, and all the best for your results. The results will come out in the next. Yes, that's it, and it's a very big setback that uh, the institute hasn't announced the August attempt, so you will get only one attempt more this year. So the November attempt. So make sure you make the full use of that. Okay. Thank you, all of you.